हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन देखो, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई where if xy equals to x cube plus y cube divided by x minus y when x not equals to y, and that will be equal to 0 when x equals to y at the point 0 comma 0. That means you have to discuss the continuity and differentiability of the given function at the point 0 comma 0. Okay, whether the given function will be continuous or not, differentiable or not at the point 0 comma 0. So at first see the meaning of continuity. A function will be continuous if the functional value and the limiting value at the given point must be equal. That means if that double limit xy tends to a comma b, if xy that will be equals to f of a comma b, then we can say that if xy is continuous at a comma b. Okay. Note, you have to remember those two notes. Every differentiable function is continuous, but converse is not true. कन्वर्स मतलब है कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है उसका मतलब वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, कोई भी गारंटी नहीं। नेक्स्ट नोट टू देखो, इफ अ फंक्शन is not continuous, okay, then it is not differentiable. So that means not continuity, that will imply that function is not differentiable. Okay, now look at the answer of the given question. We have to show that for checking the continuity of the given function, we have to show that limit x y tends to 0 comma 0, that means the double limit of the function at the point 0 0, that must be equal to f of 0 0. Okay, for continuity at 0 comma 0, here f of 0 0 is 0 because in a given function it is defined that when x equals to y, x equals to y means जब दोनों ही एक्स क्वाड्रेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट यहाँ पर सेम हो जाएगा या पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, तब फंक्शन का वैल्यू है 0। ओके, तो यहाँ पर देखो 0 0 दोनों ही वैल्यू 0 है ना यहाँ पर एक्स एंड वाई का, तो एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट, okay, x comma y tends to 0 0. Now limit xy tends to 0 0, f of xy that will be equals to limit xy tends to 0 0, the given function x cube plus y cube divided by x minus y. Now let us consider the limit along the path y equals to x minus mx cube. Okay, this is a very important path, remember it, okay, for solving those kind of problem. Then y tends to 0, that will also imply that x tends to 0. That means xy tends to 0 comma 0, that will imply that x tends to 0. Okay, that means the double limit will converted to single limit. Okay, single variable limit. So limit x comma y tends to 0 comma 0, x cube plus y cube divided by x minus y, that will be equals to limit x tends to 0, x cube plus, just put that value of y equals to x minus mx cube. So ultimately you will get x cube plus x minus mx cube whole cube divided by x minus y. Y means x minus mx cube. Okay, after that what you will get? You will get x cube plus, if you carefully observe those two terms x minus mx cube, you can take ix common from those two terms. Okay, so I have just taken common that x. After that I have written that 1 minus mx square whole cube divided by x minus x plus mx cube. X and x will be eliminated from here, plus x minus x. Okay, and that x, okay, if you take the cube of the whole term, okay, that will become x cube into 1 minus mx square whole cube.
Okay, so ultimately you will get x cube plus x cube into 1 minus mx square whole cube divided by mx cube. Take the term x cube as common. So what you will get? Limit x tends to 0, x cube into 1 plus 1 minus mx square whole cube divided by mx cube. Now न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखो दोनों में ही x क्यूब है, तो कट जाएगा यहाँ पर. तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस 1 minus mx square whole cube divided by m. Now put the limit. So what you will get? You will get 1 plus 1 minus m into 0. Okay, m into 0 means 0 whole cube divided by m. So 1 plus, there will be 1 cube means 1 minus 0 means 1, and then 1 cube is 1. So 1 plus 1 will be 2 by m, where m not equals to 0. So that will gives you different values for different value of m. So which is different for different values of m. अब देखो लिमिट तो यूनिक होना चाहिए ना, चाहे तुम कोई भी पाथ से आ जाओ, ठीक है. तो लिमिट ऑलवेज विल बी यूनिक. तो यहाँ पर therefore that limit, the double limit xy tends to 0 0 f of xy does not exist. So therefore does not exist कर रहा है, ठीक है. अब कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इसको एग्जिस्ट करना पड़ता था, ठीक है. उसके साथ साथ फंक्शनल वैल्यू दैट मीन्स 0, ठीक है. देखो यहाँ पर मैंने बताया था फंक्शनल वैल्यू क्या था, यहाँ पर एफ ऑफ 0 0 इज 0. ओके, देखो कंटिन्यूटी के लिए क्या चेक करना था, यहाँ पर तुम लोगों को दिखाना था लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 0. बट एफ ऑफ 0 0 ठीक है 0 आ गया, लेकिन ये जो लिमिट है डबल लिमिट, ये तो डज नॉट एग्जिस्ट है. तो इक्वल कैसे होगा? इक्वल का तो यहाँ पर बात ही नहीं होगा, ठीक है. एग्जिस्ट ही नहीं करेगा लिमिट. तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा वो उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वल है या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो देयरफॉर मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस एट द पॉइंट 0 0. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0. ओके, थैंक यू.